this x is defined. So a point, suppose if we take that point is suppose any point which x star, and that is of course belongs to that interval. Okay, this x star is called a zero of solution. This is a zero of solution y of the equation, given this equation, that is uh, you know that that equation is star. Okay, so the equation star. Okay, if this y at this point at x star, that equals to zero, so you know that this point is called zero of the solution of this equation star. Okay, similarly, what is a oscillatory and non-oscillatory solution? So here there are basically two category. First one is non-oscillatory, second one oscillatory, which is a non-oscillatory, that is your oscillatory. Okay, so what is non-oscillatory? So equation star is called, this is called non-oscillatory, if for every solution y there exists some point which belongs to that domain such that y does not have a zero solution of zero. Okay, in the given interval, and that interval is x naught to infinity. Okay, so this equation star is called non-oscillatory if for every solution y there exists this point such that y does not have a zero in that uh, interval. Okay, and second one, what is oscillatory if this condition is false. Okay, so second one equation star is called oscillatory if this first condition is fails or this is false. Okay, so if we have two types of linear differential equation, suppose if we consider the linear equation, this is a linear equation, and suppose this linear equation of type say simple example, say y double prime, suppose y double prime minus y that equals to 0 when your x is lies between 0 to infinity. Okay, so what is the general solution of this differential equation? So you know that auxiliary equation is m square minus 1 equals to 0, so m equals to m square equals to 1, so m equals to plus minus 1. In that sense, your general solution is e to the power mx, m1x plus something constant e to the power m2x. So here your general solution, so the general solution is defined by, say, y equals to some constant, suppose a, e to the power 1x means simply x, and plus e to the power minus x. These are the general solution of that. Okay, what is a and b? So where a and b are basically constants. Okay, you can write c1, c2, or we can here write this is a and b. Okay, so this general solution for any x is greater or equals to 0, this never that equals to 0. Okay, because for any value of x, this is not equals to 0. Okay, so here this is because if you take a and b both are 0, so in that case y equals to 0, this is the trivial case. Okay, so we are interested to find this is a non-trivial solution. Okay, so what is the non-trivial solution? In that sense, this for any non-zero a and b, for any x which lies between 0 and infinity, this is not equals to 0. Okay, so this means the above equation, this above equation is non-oscillatory
So you can write from definition first. Okay, from definition first, you say that this is a non-oscillatory. Okay, so if we take another form, suppose y prime plus y equals to zero. Okay, so this is oscillatory or not? So in next page, we consider the linear. सर Which, uh-huh. सर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन एक बार क्लियर करिए सर। Trivial solution means okay. Trivial means at y equals to zero with a trivial one. Okay, तो ये तो होगा ही होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लिखो y equals to ट्रिवियल zero. होने के लिए किसी भी एक पॉइंट पे हो जाए या इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे जीरो? सॉरी कि क्या करें एक नहीं नहीं ट्रिवियल मतलब कि वो ऑब्वियस है कि वो तो सोल्यूशन उसका होगा ही होगा। जैसे आप इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस में आप जानते हो कि x इक्वल्स टू जीरो जो है आपका एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जीरो अगर आप ले लो तो जीरो विद ट्रिवियल सॉल्यूशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में अगर सारे वेरिएबल जीरो रख लो तो राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू जीरो तो होना ही है फॉर होमोजेनियस कंडीशन में। ओके, तो दिस वन द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आप सिंपल लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा ना ऐसा आप अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन लिखूं सपोज 2x प्लस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो। सपोज मान लीजिए हमने ऐसा इक्वेशन लिखा। ओके, तो इस केस में आप एक्स एंड वाई यू हैव टू टेस्ट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन आप क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि अगर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट कर लो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 तो दिस इज अ ट्रिवियल वन बिकॉज़ x भी 0 हो जाए y भी 0 हो जाए लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ये होमोजेनियस कंडीशन में। दिस इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, बट ऐसा है नहीं इनको आप सॉल्व करके देखो तो जहाँ पे x एंड y आपको कुछ न कुछ इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस में आपको कुछ न कुछ ऐसे मिल सकते हैं। ओके, और a1 by a2 and b1 by b2 उस फॉर्म से आप देखें। इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस व्हिच इज ऑब्वियस। ओके, कि वो x इक्वल्स टू 0 या दैट डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 विद एनी सॉल्यूशन उसके तो सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। जीरो जीरो सॉल्यूशन दैट इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे आप किस में है कि आप नॉन ट्रिवियल के केस में आप इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि ट्रिवियल ना हो। तो आप ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो इस इंटरवल में आप फाइंड कर पाए कि वहां पे आपका किस x इक्वल्स टू x नॉट के लिए या x स्टार के लिए आपका जो y है वो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे आप अगर इसके कंडीशन देखो अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम y इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर लें तो y इक्वल्स टू 0 अगर आपने यहाँ पे देखा सपोज y इक्वल्स टू 0। ओके, तो y इक्वल्स टू 0 हमारा कब आएगा? y इक्वल्स टू 0 जो है अगर y इक्वल्स टू 0 सो दिस मींस y डबल प्राइम y double prime भी obviously 0 ही होगा because y equals to 0. This will, if you putting here, तो y equals to 0 and y double prime equals 0, left hand side equals to 0 and right hand side equals to 0. This satisfies this second order differential equation. Y equals to 0 with a trivial solution of this linear differential equation. अगर ये आपका सोल्यूशन अगर आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता तो आप यहीं पे सिद्ध कर देते y इक्वल्स टू 0 ही मेरा सोल्यूशन है और फिर आपको कुछ आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर आप क्यों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिखते हो दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, बाय पुटिंग d by dx इक्वल्स टू m एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके आ जाते हैं m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ये m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो इसके होंगे दैट इज y इक्वल्स टू इस फॉर्म में आप लिख देते हो। ठीक है, तो दिस इज योर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली इसको क्या है इसको आप सेटिस्फाई कर ही रहा है तो ये तो इसका सॉल्यूशन होगा ही y इक्वल्स टू 0। तो जीरो सॉल्यूशन डजंट सेंस यानी कि आप ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालें वो तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो जब भी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो दैट इज योर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो कुछ हेलो सर। हाँ हाँ सर जैसे अगर नॉन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका भी कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं उस केस में आपका नहीं हो पाएगा, उस केस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, और या तो फिर अगर उसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई है नॉन होमोजीनियस और अगर आपके नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर नॉन लीनियर इफ मल्टीप्लाइड बाय y। ओके, तो उस केस में वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप y अगर डिनोमिनेटर टर्म है सपोज 1 by y टर्म है y से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको देखने में नॉन होमोजीनियस लग रहा है कांस्टेंट बट डिनोमिनेटर टर्म y then putting y equals to 0 you get y equals 0 equals to 0।
ओके, सो इन दैट सेंस वो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, लेकिन वो आपका इन जनरल आपका नॉन होमोजीनियस तो हुआ ही नहीं। ओके, जब आप उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पे वो नॉन होमोजीनियस रहा ही नहीं। हाँ, अगर सिंप्लीफाई करने पे नॉन होमोजीनियस है तो उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आपके इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिल रहे हो, तो उसको आपको नहीं लेना, उसको आपको नहीं लेना। आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के बारे में आपने डिस्कस करना है। तो जनरली हम जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो नॉन ट्रिवियल की ही बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको जो बताई जाती हैं चीजें सॉल्यूशन निकालने के लिए, जनरल मेथड सारे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बताए गए, वो सभी के सभी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए बताए जाते हैं। वो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही एक, तो y को 0 पुट करने पर अगर वो इक्वालिटी अगर आपको सेटिस्फाई करके, दैट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन निकाल करके आपको रुक नहीं जाना है, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन होगा ही। तो इसलिए उसको कहते हैं कि इसकी कोई सेंस ही नहीं है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इसलिए जब भी हम पास सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज योर नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ पे जब भी कभी बात होगी सॉल्यूशन मींस नॉन ट्रिवियल। ओके, तो ट्रिवियल तो है ही, तो उसके लिए फिर आपको करने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सॉल्यूशन निकालने हैं जहाँ पे आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाला और वहां पे आपने x को देखा कि किस x पे मेरा y मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, किस x पे मेरा y इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस केस में आप देखें तो फॉर एनी x जो कि हमारा, इसी केस में अगर हम a और b दोनों अगर हम कांस्टेंट को हम 0 कर लें, इफ a and b आर बोथ आर 0, तो इन दैट केस y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसलिए हम a और b को क्या लेते हैं, ऑलवेज नॉन जीरो लेते हैं। ओके, तो ए बी हमारे क्या है, जो कांस्टेंट्स हैं वो नॉन जीरो है। ओके, तो इस सेंस में हमारा वो x जो कि ये दोनों नॉन जीरो हो, वो x हमारा क्या होगा, जिस x पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मेरी 0 हो जाए, एंड दैट x बिलोंगिंग टू दैट डोमेन, ये डोमेन इज 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो इस केस में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा x इक्वल्स टू, सपोज आपने 0 भी रख लिया, तो a प्लस b वेयर a and b आर नॉन जीरो, देन y इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दैट मींस दिस इज योर सॉल्यूशन इज नॉन ऑक्सिलेटरी। ओके, अब इसी में थोड़ा सा हम इसको प्लस साइन कर लें। आप यहाँ पे प्लस साइन कर लोगे तो यहाँ पे आपके रूट्स जो होंगे प्लस माइनस इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी हो गए तो फिर आपका जो सोल्यूशन है दैट इज समथिंग लाइक कॉस एंड प्लस साइन की फॉर्म। अब वहां पे आपको ढूंढना हो कि वो ऑक्सिलेटरी होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ऑक्सिलेटरी का सेंस आपको जैसे रफली अगर आपको समझना हो तो जैसे बेसिकली जो आपको मालूम भी है कि हम जो सोल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं, तो बेसिकली हमें गिवन तो होते हैं वो आपके टेंजेंट डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट सॉल्यूशन इज बेसिकली अ कर्व। तो ये कर्व जो है ऑक्सिलेटरी का सेंस हो गया कि एक सिंपल चीज जानते हो कि दिस इज योर सपोज x एंड हियर दिस इज y। तो जो भी कर्व आप निकाल लो, सपोज दिस टाइप की कर्व आप निकाली, ओके, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या होंगे, दैट y इक्वल्स टू हियर y इक्वल्स टू 0 एंड दैट पॉइंट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हमारे y हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे 0 हो रहे हैं। ओके, सो दिस मीन्स कि अगर आपको यही है कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या कहते हैं कि ऑक्सीलेट कर रहा है बेसिकली, तो उसमें हमारे पास इसके बाद अगर एक भी हमारे पास एक पॉइंट मिल जाए जहाँ पे वो फिर से मेरा 0 हो जाए, तो दैट इज योर ऑक्सीलेटरी नेचर। ओके, सो यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा y मेरा कब 0 होता है इस डोमेन में, और डोमेन आपका गिवन है। डोमेन आपका छोटा इंटरवल भी हो सकता है, a टू b भी हो सकता है, डोमेन आपके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, डोमेन आपका 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है, सो कुछ भी। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि इन विच पॉइंट दिस y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा 0 है तो फिर वो आपका 0 सोल्यूशन होंगे। ओके, और अगर नहीं है तो आपके नहीं होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें और इसका हम सेकंड केस हम देखें कि अगर हम प्लस करके देखें और देखें कि व्हाट इज आवर जनरल सॉल्यूशन, एंड देन ट्राई टू फाइंड कि व्हाट इज दिस इज ऑक्सिलेटरी और नॉट। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे हम एक छोटा एग्जांपल दें, और सपोज द इक्वेशन is y double prime plus y equals to 0. Okay, this is oscillatory or not. Okay, तो
इस तरह के ढेर सारे आप कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख लें और देखें कि वो ऑक्सिलेटरी इन नेचर है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल लें। सो द जनरल सॉल्यूशन इज which is y equals to a cos and b sine, and here x is greater or equal to 0 or x belongs to 0 to infinity. Okay, so without loss of generality, we assume that both a and b are non-zero. Okay, so here a and b are constants, a and b are non-zero कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें अगर क्योंकि अगर वो जीरो कांस्टेंट है तो y इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0 विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, तो y इक्वल्स टू 0, अगर y इक्वल्स टू 0 रख लें तो y इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर लिया और 0 की डबल डेरिवेटिव भी 0 होगी, 0 + 0 इक्वल्स टू 0। दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, दिस इज y बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट। लेकिन y इक्वल्स टू 0 बी द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड you write here, otherwise y is trivial oscillatory। ओके, सो अगर ये नॉन जीरो नहीं हुआ तो अगर ये जीरो है तो उस केस में तो ये ट्रिवियल ऑक्सिलेटरी तो होगा ही होगा। ओके, सो यहाँ पे देखें कि हम ये जीरो कब होगा, देन y इक्वल्स टू 0 मींस दिस इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? सो दिस मींस a cos x plus b sin x that equals to 0, we have to find what y equals to 0 and we have to find what is the value of x। तो अगर y equals to 0 कर लें और x की किस वैल्यू पे that equals to 0 हो and that x is belonging to this interval। okay, so this means you find here, so what is x here? So x equals to this equals to 0, this equals to n pi plus tan inverse, this is angle a and b। okay, so this, okay, so at equals n pi plus tan inverse b by a, and where n equals to oppose 0, 1, 2, and so on। okay, so here this is 0 for this x। okay, so for this x means x axis पे आप ये देखें तो for different points आपको मिलेंगे जहाँ पे ये आपके क्या होता है 0 है। okay, so this means you say that the above equation is oscillatory। okay, so this means simply you have to find what is the zero solution, and if you have find that zero solution, okay, and if this x is belonging to that given domain, so that solution is your oscillatory in nature। okay, so okay, तो ये तो आपके एक जनरल सॉल्यूशन थे जो कि जीरो सॉल्यूशन क्या है, ऑक्सिलेटरी नेचर और नॉन ऑक्सिलेटरी नेचर। एंड एक चीज और इसमें छूट रही थी, दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म भी छूट रहा है, तो नॉर्मल फॉर्म भी हम करा देते हैं और उसके बाद हेलो सर, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं क्या? जो इक्वेशन जो दिया है d² + 1 = 0, तो सर फिर 1 को सर उधर लेके चले जाएंगे, -1 हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, उससे भी तो सर मालूम हो जाएगा ऑसिलेट है। क्या मालूम हो जाएगा उससे? क्या मालूम करना चाहते हैं सर? ऑसिलेट है या नहीं है सर? दैट इक्वल्स टू 0, तो आपका कहना है कि ये आपका -1 हो जाएगा और दिस इक्वल्स टू क्या लिखना चाहते हैं, इमेजिनरी नंबर? यस सर। हाँ हाँ यस हाँ, फिर तो इमेजिनरी नंबर सर आता है तो ऑसिलेट ही होता है ना इक्वेशन? इमेजिनरी नंबर आएगा तो ये तो रूट्स आ गए ना आपके। यस सर, तो वो सर ऑसिलेट होगा ना सर? कैसे ऑसिलेट होगा वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताएं। ठीक है, आप तो सही जा रहे हो, लेकिन बताओ तो सही कैसे, क्यों ऑसिलेट होगा? रूट्स अगर आपके इमेजिनरी आ गए तो क्यों ऑक्सिलेट होगा, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ।
सर इतना सा हाँ। नहीं मालूम है सर, बस ये मालूम है सर इमेजिनरी वही आता है। बात है, वही बात है। ये जो है वो यहीं से निकल के आता है। ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आपको पता है ना, ये रिजल्ट, यस सर। हाँ, तो ये रिजल्ट कहाँ से आया है? यहीं से आया है कि अगर ये ऑक्सीलेटरी नेचर है तो सोल्यूशन मेरा ये होगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारी दोनों जीरो ना हो तो उस केस में एक्स हमारा ऑक्सीलेटरी नेचर का होता है। जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो साइन कोसाइन के फॉर्म में आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? आएंगे। यस सर। यस तो सर। आएंगे तो आपको पता है कि साइन और कोसाइन वाला मेरा ऑक्सीलेटरी नेचर में होते हैं, और सोल्यूशन मेरा इस तरह से होगा तो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ मिलेगा। इसीलिए वो चीज है, वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट है वो। इसी से वो रिजल्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी डेरिवेशन वो नहीं है, लेकिन ये उसकी थीम है, उसके पीछे ये चीज है, लॉजिक है। ये सोल्यूशन इस तरह के आते हैं, इमेजिनरी से हमेशा साइन कोसाइन फंक्शन आते हैं दैट आर इन ऑक्सीलेटरी नेचर, दैट्स व्हाई जो सोल्यूशन होगा वो ऑक्सीलेटरी होगा। ठीक है सर ऑसिलेटरी में ऐसा है क्या कि किसी टू और मोर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए? सर ऐसा कुछ तो नहीं है ना ऑसिलेटरी में कि किसी टू और मोर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए? सेम नहीं, आपकी जीरो आनी चाहिए। जीरो में समझ रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है सोल्यूशन जो है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि साइन कोसाइन ही फंक्शन हो, वो कोई फंक्शन हो सकता है जो कि इसको क्या करे, कट कर रहा हो। भाई एक्स वाई मेरा जीरो कब होगा? सिंपल बात है, वाई मेरा जीरो कब होगा? जबकि वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। एंड यू हैव टू फाइंड दैट एक्स, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ओके, तो अगर आपको एक्स मिल जाए जो कि बिलोंग करे उस डोमेन में, अगर आपको बिलोंग कर रहा है जहां पे कि y इक्वल टू 0 हो गया है, दिस मींस दिस सॉल्यूशन इज इन ऑक्सीलेटरी नेचर। अगर आपको कोई भी ऐसा इस डोमेन में नहीं मिल रहा है, दिस मींस दिस इज नॉट ऑक्सीलेटरी। Okay, so if you are find that x which belongs to that where y equals to 0 and that is non-trivial solution, then that solution is in oscillatory nature. And if you are not able to find any x which belongs to that domain and y is not equals to y equals to 0, so that solution is your in non-oscillatory nature. Clear? बस आपको ये करना है। तो वहां पे अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो वहां पे तो मिलना ही मिलना है, अगर इमेजिनरी है तो मिलना ही मिलना है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि इमेजिनरी ही होगा तभी आपके सोल्यूशन ऑक्सीलेटरी होंगे, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये है तो ऑक्सीलेटरी नेचर होगा, ओके होगा ही होगा, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा भी फंक्शन मिल सकते हैं जो कि आपके ऑक्सीलेटरी नेचर हो। ठीक है, ठीक है, जहां पर भी आपको मिल जाए, ऐसा x मिल जाए जो कि इस डोमेन में बिलोंग करे और y की वैल्यू 0 हो, लेकिन दैट y इक्वल्स टू 0 इज बी द नॉन ट्रिवियल। ओके, वो ट्रिवियल तो आपको मिल ही रहा है, तो वो y हमें नहीं लेना। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 तो एक सॉल्यूशन है ही है। y इक्वल्स टू 0 का मतलब सेंस ये क्या है, सॉल्यूशन इसका। y इक्वल्स टू 0 मतलब हो गया, y इक्वल्स टू 0 का सेंस है कि y फॉर एनी x दैट इक्वल्स टू 0, तो दिस इज जो जीरो सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये तो आपका ट्रिवियल है। तो आप एनी एक्स कुछ भी एक्स में पुट कर लो, और एनी एक्स कोई भी डोमेन का कोई भी एक्स में पुट कर लो, y इक्वल टू 0 ही होगा। y इक्वल टू 0 है तो y डबल प्राइम भी मेरा 0 ही होगा। y डबल प्राइम प्लस और माइनस जो भी लोगे तो दैट इज ऑब्वियसली 0 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलाने, ऐसा हो एक्सपोनेंशियल हो, जिस तरह के हाइपरबोलिक हो, जैसा भी। ओके, उसमें आपको ऐसा एक्स लेना है जो कि इसमें बिलोंग करे, और यू फाइंड y इक्वल टू 0, दैट इज योर ऑक्सीलेटरी रीजन। क्लियर? ठीक है, तो एक पोर्शन और है आपका नॉर्मल फॉर्म, तो आज हम नॉर्मल फॉर्म करा देते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टर्म से हम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे हम चलें नॉर्मल फॉर्म में, और आप जानते भी हो कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज, बिकॉज यूजी स्टैंडर्ड पे बहुत सी जगह पढ़ाई जाती है चीजें। ओके, so suppose any a and b are continuous function which defined in 0 to infinity to r, and this be continuous functions. And if we consider second, and that differential equation is of type, this is your homogeneous second order differential equation, and here this x is greater or equals to 0, this belongs to that interval, and suppose this is equation number A. Okay,
So here, if this condition is given, so we have a theorem, and that statement of that theorem is assume that this theorem says that if you assume the d by dx of your ax, okay, because this is your continuous function, and if this is equivalent to a prime, okay, and this derivative of this function is exist and is continuous, okay. So so if the derivative of this a, if you differentiate this function of x, this coefficient of y prime, and that is if we denote by a prime, and this is derivative of with respect to x, and this is exist as well as is continuous, because initially this is given only the continuous. This is continuous. This may be a differentiable or may not be in this given domain. So here we assume that this a be not only the continuous but also a differentiable, okay, in that domain, okay. So here this is continuous for x is greater or equals to 0, okay. So then our equation, if we define by this equation, suppose a, so this equation a is oscillatory, okay. So this is a theorem. This is a theorem. If this is your the derivative of that is existent, of course continuous, then this equation a is oscillatory if and only if ये oscillatory कब होगा, जब आपके पास एक equation होगी, and that equation is in normal form, if and only if the equation y prime cx y equals to 0, and suppose this is equation number b, okay. This equation is of oscillatory, okay. So this equation a, इस equation a को आप oscillatory कब कहोगे, ये oscillatory कब होगा, जबकि आपका इस coefficient of this is differentiable, and if this equation is of oscillatory nature, अगर ये oscillatory nature का है तो ये भी आपका oscillatory nature होगा, अगर ये oscillatory nature का नहीं है तो ये भी आपका नहीं होगा. This is oscillatory where what is your c? So c x is bx minus 1 by 4 of this y prime coefficients, and this is derivative of that, okay, a dash of ax. And you know that the equation, this is b, is called the normal form of equation a, okay. So you know that this is your normal form, and normal form में आप लिखना तो जानते हो, यूजी स्टैंडर्ड में ये बताए जाते हैं कि हम किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म पर ये होगी जहां पे cx की वैल्यू ये चीज होती है, तो यूजुअली आप लिख देते हैं. तो बट नॉर्मल फॉर्म हम क्यों लिखते हैं? नॉर्मल फॉर्म इसलिए लिखते हैं कि अगर हमारा नॉर्मल फॉर्म, अगर ये नॉर्मल फॉर्म अगर हमारा ऑक्सीलेटरी नेचर का है, तो हमारा मेन इक्वेशन भी मेरा ऑक्सीलेटरी नेचर का होगा, ओके. तो जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, मेरी सेम होगी, ओके. तो बेसिकली जो सोल्यूशन जो होंगे, तो y अगर इसका सोल्यूशन है तो y इसका भी सोल्यूशन होगा, ओके. तो इसकी प्रूफ हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं. सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सो नेक्स्ट पेज, ओके. व्हाट इज द प्रूफ? So suppose y be any solution of equation A, मेरे ख्याल से हाँ first equation A, तो y be the any solution of A, and we consider the transformation that is say Vx and Zx. Okay. Suppose this transformation where x is equals to 0, and suppose this is equation number C. Okay. So here we take this y is equals to Vx and Zx,
and here y will be the solution of that equation A, and this is the second order differential equation. So here we take this V and Z are basically V and Z are twice differentiable function. Okay, so here if what is the value of y prime here? So y prime that equals to first function. So if y equals to suppose vz, what is y prime? So y prime is this and this thing. Okay, first function derivative of second and second derivative of first. And what is y double prime? So if we differentiate this, so this becomes vz prime plus v prime z prime, this one. And for second one, this is v prime z prime plus v double prime, this thing. Okay, so this means v z prime plus 2 vz and v double prime z. Okay, so this is your y double prime. So here you substitute here in main equation. So if we substituting, of the value of y prime, y double prime, and okay, and what is y? Okay, and y in equation A. Okay, so we get, okay, so what is the equation A is y double prime is v double prime plus 2v prime z prime plus v double prime z. This is your y double prime plus A. What is y prime is v z prime v prime z, and plus b, and this is bx here. This is a function of x, of course, and into y, and y is vz. So this equals to 0. Okay, so now if we are trying to write this is in the form of double prime, v double z double prime. So this equals to v z double prime plus what is the coefficient of z prime here? So z prime is here and z prime is here. Okay, so if we adding these two, so this becomes 2v prime from here and here. This is ax. This a is the function of x, and v. This is the coefficient of z prime. Coefficient of z prime plus what is the coefficient of z is here. This is v double prime, and here v double prime plus ax into v prime. So ax into v prime, and plus here this is bx v, and that into z, that equals to 0. Okay, so if we rewrite this equation in this form, okay, so thus if we equating the coefficients of z prime to 0, because we can write this is in normal form. So we have if we coefficient of that equals to suppose 0, so we have this equals to 2 dv over dx plus ax into v equals to 0. So this implies we can write ax vx. This is v with the function of x, of course. This is vx, that equals to minus 2 dv by dx. Okay, so this equals to dv by v dx. Now if we integrate this, this becomes dv by v. So this equals to, for any 0 to x, and here this is minus 1 by 2, and this is function of say another variable, say s and ds. Okay, so this implies what is your vx? So vx equals to exponential of this, this becomes minus half log of v. So log of v equals to e to the power that thing. Okay,
So this becomes 0 to x and a as ds. Okay, so suppose this is the equation number D. Okay. Okay, so this is equation number D. So you find here if this coefficient, this z prime coefficient that equals to 0, if this is equals to 0, then you have a solution Vx equals to this thing. Okay, so therefore your equation z, if this equals to 0 here, if you put here this equals to 0, then what is the solution here? So this becomes you see this is z double prime plus something this thing v prime plus ax v prime plus bx v and z that equals to 0. Okay, so if this coefficient is 0, so then your equation, this equation reduces to in this form. Okay, and if we divide by this v, so this becomes by v. Here this is 0. Okay, so this is z double prime plus something which is function of x, of course, function of x, because all are function of x here. Okay, so this becomes z double prime. सर Okay. सर यहाँ पे आपने जो लास्ट लाइन में यहाँ पे जो लिख आवाज नहीं आ रही, बोले लास्ट लाइन में। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर जो लास्ट लाइन में आप जो लिखे हैं समेशन ऑफ 0 टू v dv अपॉन v इक्वल टू 0 टू x माइनस 1 अपॉन ए, सर वहाँ पे as है कि ax होगा वहाँ पे? ये ना यहाँ पे यस सर, ये a फंक्शन ऑफ s कर गया ना, क्योंकि ये x में आ गया ना लिमिट्स हमारी। ओके, तो इसको हमने वेरिएबल चेंज कर लिया as एंड dA। आप कोई भी अंदर आप वेरिएबल चेंज कर लें। हाँ यस सर, मैं समझ गया सर। समझ गए ना? यस सर। ओके, तो ये चीज होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये कुछ इस फॉर्म की हो गई, z डबल प्राइम समथिंग फंक्शन, इफ v से अगर हम डिवाइड कर लें तो z डबल प्राइम प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ x z इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट समथिंग z डबल प्राइम प्लस c ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x, तो वी डिनोट हियर cx एंड दैट इज z इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस तरह से इसे आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे हम यही चीज करेंगे कि इसको हमने 0 कर लिया और v की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, और अगर ये भी एक सॉल्यूशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में रिड्यूस होगा, ओके, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट पेज ओके, सो हियर देयरफॉर you can write here z satisfies differential equation that is z double prime plus c of x z equals to 0, and here x is greater or equals to 0. Okay, so this result is similar to your equation b. What is equation b? Equation b is y double prime cx of y equals to 0. This is equation number b. Okay, so here suppose this is similar to that, so we denote this is suppose a b1. Okay, for that reference. Okay, so here what is your c here? So what is the value of c? So here cx that equals to 1 by v, and if you divide that equals to b of vx. Okay, to v of vx. Okay, so on dividing by that v, so you get this thing, and if this equals to, we can write here this is v double prime plus ax v prime by v plus b, because vx and vx are cancelled out. Okay, so this is your result, or you can write this is equals to vx plus ax v prime by v plus v double prime by v. Okay, so you can write in ascending order of primes. Okay,
So since you know that what is the solution Vx is exponential of minus half 0 to x, and this is a as ds. So this implies what is the v prime and what is the v double prime. So v prime is equals to, this is the exponential of minus 1 by 2 0 to x as ds. This is exponential of that, this thing, and derivative of that is into half, and differentiation of this is simply ax. Okay, so this is your v prime. Similarly, what is your v double prime? So v double prime is exponential, again differentiating this thing. So this is a minus 1 by 2 0 to s 0 to x as ds, and here you get if we differentiate this, so this into this becomes minus of minus and minus plus, so this becomes 1 by 4 and a square x, and differentiation of that is what is the differentiation of that is minus 1 by 2, and a differentiation of a is a prime x. Okay, so this is the derivative of v double prime. Okay, so here you find the value of what is the v prime and v double prime and what is vx, and if you put in here, so what is the value of v prime by v, if we are interested to find this value. So this equals to exponential of minus half 0 to x as ds minus half ax. This is so v prime divided by what is your v. V is exponential of minus half 0 to x as ds. So if with dividing these two, you get this thing. Okay, and what is your v double prime by v? V double prime by v equals to this is v double prime. So this is exponential of minus 1 by 2 0 to x is a 0 to x, and as ds multiplied by 1 by 4 a square x minus 1 by 2 a prime x, this thing, divided by v. V is exponential of minus 1 by 2 0 to x and as ds. Okay, so if we try to solve this thing, you get 1 by 4 a square x minus 1 by 2 a prime x. Okay, that's why we take here a function is the differentiable one. Okay, so because a is the differentiable, then this exists, this is a finite. Okay, so here we are interested to find what is the value of cx here. So if we this is bx plus ax into v prime by v, this thing, and v double prime by v is this thing. Okay, so v this thing and this thing. So here we put back in this equation and try to find what is the value of cx here. Okay, so in next page, what is the value of cx? Okay, so this implies what is cx? So cx is bx plus ax v prime by v plus double prime by v. Okay, what is the value of v prime by v? So here you know that this is 1 by 2 of ax, and here what is the value of v double prime? This equals to 1 by 4 a square x minus 1 by 2 a prime x. Okay, so if you try to solve this equation, this is minus a square x by 2 and plus this is 1 by 4 a square by x minus 1 by 2 a prime x. Okay, so so this implies cx that equals to bx minus 1 by 4, because if we try to solve this too, so this is a square x minus half a prime x. Okay, so this is your equation E. Okay, so here you find what is the value of cx here. Okay, so actually if your y is a solution, if this y is the solution of your equation A, initially you take this, then you can write from equation C and D,
you can write here what is your zx. So zx equals to yx exponential of, because y equals to zx into vx and vx equals to exponential of minus sign. So here this becomes plus sign half of 0 to x as ts. This is your zx. Okay, so this is solution. This is solution of your equation B, and your equation B is y double prime plus cx y equals to 0. Okay, and this is you can write this. This is from B1. Okay, so you can look this thing. Okay, similarly, if Z is a solution of your equation B, then what is your yx? So yx is zx exponential of half 0 to x as ds, where x is greater or equal to 0. This is solution of सर A. Okay. सर आपने हेलो हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। सर जो आपने लिखे हैं जेड एक्स इक्वल टू वाई एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ हाफ 0 टू एक्स, सर वहाँ पे माइनस आपका मिस है लग रहा है। नहीं, because y equals to v z. Okay, so what is z is? Yes. Z is okay. That's why this exponential minus sign is plus sign. Okay, clear? Oh, okay, sir. ठीक है. That's why we can write here. Okay, here you look here, yx equals zx into vx. Vx देखिए यहाँ पे minus sign लिखा है. Okay, so this is solution of it. Okay, so this means if this is y is solution of A, then this is solution of B, and if this is solution of B, then yx is solution of A. Okay, and this this holds this your theorem. So that's the theorem holds. Okay, तो इसको आप देखिएगा और ये आप लिख सकते हैं कि we know that equation A is oscillatory if and only if equation B is oscillatory. Okay, तो that's why क्योंकि अगर ये इसका solution है, ये भी इसका solution होगा, और ये इसका solution है, तो ये इसका solution है. This means you write down कि equation A is oscillatory if and only if equation B is oscillatory. So here you can write a remark. This is we know that equation A is oscillatory if and only if equation B is oscillatory. Okay, so ये आपका ओके 10:59 हो गए, तो आज इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट टर्म पे हम एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, दैट इज स्टर्म लिउविल थ्योरम हम कराएंगे। ओके, तो कल आप क्या फ्री हैं, इस सेम टाइम पे फ्री हैं या फिर आप 4 बजे से पढ़ेंगे, क्या है आपका, जैसा आप बताएं। सर इस टाइम फ्री रहेंगे हम लोग। सर इस टाइम फ्री रहेंगे 10 बजे, तो ठीक है, तो कल 10 बजे ही हम 10 बजे ही हम आपको कनेक्ट करेंगे। ओके, ओके 10 बजे कनेक्ट। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।